So, continuing with our current affairs series, in this particular video, we'll discuss the judgments relating to different doctrines. Now, these doctrines can be related to property, they are also related to constitution, the general legal doctrines, and important days, important person in news for the all year round. So, starting with द कंटेंट बेसिकली क्या क्या है इसमें आप देख सकते हैं. पर इंक्यूरियम जजमेंट एक है कि क्या पर इंक्यूरियम जजमेंट क्या होता है, इस बारे में बताया गया है. रेस इप्सा लॉकिटर एंड मेडिकल नेग्लिजेंस. द सेकेंड टॉपिक, द थर्ड इज लिस पेंडेंस डॉक्ट्रीन, द इम्पॉर्टेंट डेज, द अपॉइंटमेंट ऑफ आवर करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, obituaries and the legal persons, the legal news. Per incuriam judgment. Now what do you understand by per incuriam? So per incuriam judgment is a decision which is basically given or which is considered as a decision which was given after overlooking the statutory provision or legal precedent which was central to the legal issue in question. In the case of Messrs. Bajaj Alliance General Insurance Company Limited versus Rambha Devi and others, there's a bench of Honorable Chief Justice of India, the former Chief Justice of India, Dr. Neerja Sood, Justice Rishikesh Roy, P.S. Narasimha, Justice Pankaj Mittal, and Justice Manoj Mishra. Here the factors which were to be taken into consideration for holding a judgment per incuriam were held down. The first was that decision is per incuriam only when it overlooks the statutory provisions or legal precedent which is central to the legal issue in question and might have led to different outcomes if it overlooked the provisions were considered. It must be inconsistent with the provision and this must be a case of glaring omission. ठीक है, समझ में आ रहा है साफ साफ कि आपने कोई बहुत ही इम्पॉर्टेंट लीगल प्रोविजन को कंसिडरेशन में नहीं लिया है, उसको इग्नोर कर दिया है. The doctrine of per incuriam applies strictly only to the ratio decidendi. Ratio decidendi is basically the reasoning behind the judgment. It does not apply to obiter dicta. Thirdly, अगर कोर्ट को डाउट है किसी अपने प्रेसिडेंट के करेक्टनेस पे, तो अप्रोप्रिएट स्टेप क्या होगा, दैट इट शुड रेफर इट टू द लार्जर बेंच रादर दैन एक्चुअली गोइंग अगेंस्ट दैट डिसीजन. ठीक है, इट हैज़ टू बी शोन दैट सम पार्ट ऑफ द डिसीजन वॉज बेस्ड ऑन रीजनिंग विच वॉज डेमोन्स्ट्रेबली रॉन्ग फॉर अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ पर इंक्यूरियम. ठीक है, सो दैट इज इम्पॉर्टेंट. Next is res ipsa loquitur and medical negligence. Res ipsa loquitur basically implies that negligence can be proved because on the face of it it can be proved that this act was done negligently. Neerja Sood and another versus Jaswinder Singh minor and another. Here it was what was held that a doctor who follows the acceptable practice of medical profession in discharge of his duties would not be liable for patients' post-surgery complications. A doctor cannot be held liable for medical negligence by straight away applying this doctrine of res ipsa loquitur. तो medical negligence पे ये doctrine directly apply नहीं करेगी. Lis Pendens doctrine. Lis Pendens section 52 of Transfer of Property Act. बेसिकली कोई सूट अगर पेंडिंग है तो आप उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन में एंटर नहीं करेंगे. इन केस यू एंटर इनटू एनी ट्रांजैक्शन, that transaction would be subject to the result of the suit. Now here what was held in the case of Messrs. Siddham Setti Infra Projects Private Limited versus Katha Sujata Reddy and others, it was held that doctrine of lis pendens will kick in from the moment a petition is filed in the court and not at the stage when notice is issued. तो जो डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट है ना, उस डेट से लिस पेंडेंस की डॉक्ट्रिन अप्लाई कर जाएगी. ठीक है, डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट. फिर यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली कुछ कंडीशंस हैं जो फुलफिल होनी चाहिए फॉर डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस विच आई हैव मेंशन्ड ओवर हियर. यू कैन गो थ्रू देम. देयर बेसिकली इंक्लूड्स कि कोई पेंडिंग सूट होना चाहिए, किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट में होना चाहिए, वो कल्यूसिव नहीं होना चाहिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी जो सूट में इन्वॉल्व है डायरेक्टली और स्पेसिफिकली उस सूट या प्रोसीडिंग का क्वेश्चन में है, उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो राइट है वो क्वेश्चन में होना चाहिए. ये प्रॉपर्टी जो है इट मस्ट बी ट्रांसफर्ड बाय पार्टी टू लिटिगेशन. अब ये जो एलियनेशन है ये
क्या है, इट इज सब्जेक्ट टू द डिसीजन ऑफ द कोर्ट. ठीक है. इम्पॉर्टेंट डेज, इम्पॉर्टेंट लीगल डेज की अगर हम बात करें तो 9 नवंबर इज लीगल सर्विसेज डे. जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत को अभी अपॉइंट किया गया है सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के चेयरमैन. एंड द कॉन्स्टिट्यूशन डे, जहाँ पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949. इट्स अ लिविंग डॉक्यूमेंट. इसको ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है. ठीक है. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस डेट पे बन के तैयार हो गया था और हमने उस दिन इसको अडॉप्ट कर लिया था. 2 साल 11 महीने 18 दिन में हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करा था बना के. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, रिसेंटली हमारे चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना. He took oath as 51st CJI. The relevant provisions dealing with appointment of chief justice, basically article 124, wherein it was held, wherein it is stated that president appoint करेंगे. ठीक है. इनका जो टर्म ऑफ ऑफिस होगा वो रहेगा till he attains the age of 65 years. पहले चीफ जस्टिस थे हमारे मिस्टर मॉरिस गॉयर. फेडरल कोर्ट था उस टाइम पे. October 1st 1937, which was this federal court was established by Government of India Act 1935, which was later converted into Supreme Court in 1949. ठीक है. तो जो हमारे पहले चीफ जस्टिस बने इंडिपेंडेंट इंडिया के, वो बने ऑनरेबल जस्टिस हरीलाल जेकिन्सदास कानिया, HJ कानिया. ठीक है. ऑनरेबल चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने नेशनल जुडिशियल म्यूजियम एंड आर्काइव इसको इनाग्रेट किया है. ठीक है. कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं जो टाइम टू टाइम इनाग्रेट करे जाते हैं. गुजरात हाई कोर्ट का जेंडर सेंसिटाइजेशन कैंपेन, एहसास न्याय सबके लिए. नाउ चीफ जस्टिसेस ऑफ डिफरेंट हाई कोर्ट्स हैव बीन अपॉइंटेड. ऑफ जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ऑनरेबल जस्टिस ताशीर अफस्तान. Just give me Kerala High Court, of Kerala High Court and of Karnataka High Court. So these judges have been appointed, the chief justices. It is important to remember the names of the different chief justices who have been appointed. Current affairs के लिए ज़रूरी हो जाएगा. Obituaries, apart from जो आपके particular state है जिसका आप एग्ज़ाम ओरिएंट कर रहे हैं, जिसके आप एग्ज़ाम के लिए एम कर रहे हो, उस स्टेट के अलावा जितने भी स्टेट्स के रिसेंटली अपॉइंटेड चीफ जस्टिस होते हैं वो इम्पॉर्टेंट रहते हैं. ठीक है. ऑबिचरीज, जस्टिस कुलदीप सिंह, द ग्रीन जज ऑफ इंडिया. उन्होंने बहुत सारे एनवायरमेंटल लॉ रिलेटेड डिसीजंस दिए वेयर इन डिफरेंट डॉक्ट्रिन्स रिलेटिंग टू एनवायरमेंटल लॉ वर अपहेल्ड. तो वो MC मेहता केस, क्लास ट्रेपेजियम केस, दिल्ली पोल्यूशन रिलेटेड, ये सारे जो केसेस थे ये सब इनके इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स हैं जो इन्हीं के द्वारा पेन डाउन किए गए हैं. ही पास्ड अवे रिसेंटली. जस्टिस HS बेदी, जस्टिस मम्मीदन्ना जगन्नाथ राव एंड जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस KS पुत्तस्वामी. द right to privacy judgment. Recently we have lost these legal luminaries. So with this video is completed. I'll be coming up with few more videos wherein we'll be discussing the important judgments of Honorable Justice DY Chandrachud, who has actually impacted different sections of the society with his judgments. So for the time being, thank you. Please go through it. If you have any doubt, you can discuss in the team. Thank you, everyone.